Hopefully we are live now and everything is going smoothly. So let's start with today's podcast. All right. Welcome to Besides Noida podcast, everybody. I'm your host Karthik Verma from Besides Noida, and welcome to Besides Weekly Podcast. Today we have a very special guest. His name is Devansh Chauhan. He's a talented freelance bug bounty hunter and a cybersecurity enthusiast. Devansh has made significant contributions to the field, earning recognitions from top organizations and securing a spot as one of the top researchers for NCIIPC in 2023. Welcome, Devansh. We are honored and very privileged to have you with us today. And how's your weekend and kaise ho aap? Mm. I'm good, Karthik. Thank you for inviting me. So, Perfect. And I'm really looking forward to today's podcast because you, just like majority of us, you are exactly doing what majority of us want to do, bug bounty hunting. And I'm very personally, I'm also very interested in knowing कि आप क्या करते हो and how do you got started. So I want to tell my viewers, like, let's take a, like, आराम से बैठो and let's start with today's podcast. All right. So Devansh, first thing that I really want to talk to you about, and I actually start my conversation with our guest with this question only: why cybersecurity, right? So, how did you get into this field, and why cybersecurity specifically? So, can you please tell us about that? okay. In my college time, I was like keen of. I seen an internship of Gurgaon Police Cybersecurity. So I was keen interest of cybersecurity. So I applied for the internship and luckily I got admitted into it. तो इसके थ्रू मैंने इंटर्नशिप में 1 महीने की इंटर्नशिप थी. Mm-hmm. तो इंटर्नशिप में हमें पूरा साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम वगैरह के बारे में बताया गया. तो उसमें एक फील्ड आई जो कि है बग बाउंटी. Mm-hmm. तो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे, कुछ कुछ बग बाउंटी के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने मेरे को हेल्प किया क्योंकि मेरे को भी कुछ ज़्यादा पता नहीं था उसके बारे में. तो उन्होंने मेरे को पूरा सिखाया. उसके थ्रू आई केम इनटू दिस इंटरेस्ट. That is very good, and that's actually very unique तरीका जिसने जो अभी तक हमने सुना है. So आपने you were already in college. You have, for our viewers, I would like to tell our viewers that our guest has done BCA and from in computer science. And when you did that, so you got into this field by getting an opportunity to work as an intern at Gurugram Haryana Police. Am I right? Yes. Okay, so over there, while you were working, then you met people, I'm assuming, both students as well as professionals. And then आपको, you realized that you were interested in this field. Yes. All right, that's great. Also, so in cybersecurity, there are various domains, right? People get into code analysis to make sure that the code, जो भी उनके web application है, that is secure enough. People become SOC analysts. People get into blue teaming. Why bug bounty? Is there any reason कि आप specifically bug bounty की तरफ गए in cybersecurity? मेरा पहले जब मैं छोटा था तो मेरा ज़्यादा वो था कि हैकिंग वगैरह. उसके बाद मेरे को पता चला कि बग बाउंटी होता क्या है कि आप उनकी वेबसाइट को हैक करके दिखाओ, जिसके थ्रू आपको पैसे भी मिलेंगे. तो मैं इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया, इसलिए आई केम इनटू बग बाउंटी. Okay, that's crazy. And so while you started your journey, I'm sure आपने बहुत सारे, you must have faced a lot of challenges, right? Like any other individual. So can you tell us about a few challenges that you faced when you were starting your career in cybersecurity and bug bounty in specific? सो बग बाउंटी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको बग नहीं मिलता तो आप ये सोचोगे कि मेरी शायद टेक्निक वगैरह ही गलत थी. तो इसके थ्रू मतलब इससे थोड़ा मेरे को फ़र्क पड़ा था क्योंकि मैं भी जब बिगनर था तो मेरे साथ भी ये सेम चीज़ हुई थी. Hmm. All right, that's interesting. And I mean, it is crazy to know, and I would like to tell our viewers as well, including me. Most of the people suffer from imposter syndrome, right? And I'm sure आपके साथ भी वो होता ही होगा starting में. But I am actually curious to know that once you started your journey in Gurugram Haryana Police, as you said, then from there you got interested in bug bounty, started learning about that, and then how did you get involved with NCIIPC?
लाइक आपका कैसे आप उसमें इन्वॉल्व हुए एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक उनके साथ काम करते हुए. Also, sorry to interrupt you. Before you tell about that, can you please tell our viewers about NCIIPC? श्योर। तो NCIIPC एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी वेबसाइट्स होती है, जो मतलब जैसे .gov हो गई, .nic हो गई, तो ये गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट्स को। Mm-hmm. तो NCIIPC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उस वेबसाइट की सिक्योरिटी को मेंटेन करती है, और उन्होंने एक प्रोग्राम रन कर रखा है जिसमें आप अगर कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट में बग वगैरह रिपोर्ट करना है तो आप उनको उस ईमेल पे कर सकते हो, जिसके Okay. थ्रू वो आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर देंगे। और अगर आपने कुछ ज़्यादा बग्स वगैरह रिपोर्ट करे तो हो सकता है कि आपका नाम उसमें वो आर्टिकल में पब्लिश करे, और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। Okay. And I'm assuming वैसे आप उनके पार्ट बने, right? हाँ जी। Okay. मैंने भी 500 अराउंड बग्स उनको रिपोर्ट करे थे, जिसके लिए उन्होंने मेरा नाम पब्लिश किया था अपने मैगजीन पे। और उन्होंने मेरे को वर्क अपॉर्चुनिटी भी दी कि आप, पेड अपॉर्चुनिटी थी Mm-hmm. कि आप उनकी वेबसाइट्स में टेस्टिंग करो और बग्स वगैरह बताओ। All right. So you started as a bug bounty hunter for the Indian sites, as you said. And जब या आपने वहाँ पे bugs enough report कर दिया, as you said, more than 500, which is nuts. But as soon as आपने 500 plus report किए, you got a working opportunity over there as a, या I'm assuming as a full time, right? So you had an opportunity to work over there. You got an opportunity. यस। That's really nice. And this is exactly why we have you today, because we want to talk about how you got started, and we also want to talk about the technical skills and tools, so that freshers and students, and not only students, I also feel working professionals who belong from a different working background, even they can get motivated to start in this field. So let's talk about a few technical skills and tools, right? And ये obviously biased हो सकते हैं, because आप guest हमारे, you can obviously be biased, as you should be. uh, Particularly when you start a new project, right? Let's assume you went to a bug bounty platform, and after going over there, you saw a particular project that you're interested in, and you decide, okay, I want to find bugs in this particular company or this particular domain. So I actually want to know, what tools and methodologies do you use frequently, and do you find कि सबसे ज़्यादा effective होते हैं for vulnerability assessment and pen testing? ठीक है। तो जैसे मैं प्रोजेक्ट चूज करता हूँ, उसके बाद मैं उस प्रोजेक्ट के सब स्कोप्स वगैरह जो जो वेबसाइट्स में मैं टेस्टिंग कर सकता हूँ, जो कि उन्होंने मेरे को लीगली बता रखी है, Mm-hmm. उनको मैं एक नोटपैड पे लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं उसके और सब डोमेन से रिकॉन करता हूँ, सब डोमेन्स निकाल के उनकी मतलब वेबैक यूआरएल में डाल के उनकी सब सब मतलब जितनी भी रिसोर्सेज है पूरी ले लेता हूँ। Yeah. उसमें फिर मैं मैनुअल टेस्टिंग करता हूँ कुछ कुछ सब डोमेन्स में, जिसको मेरे को लगता है कि इसमें बग्स मिल सकते हैं मेरे को। वरना अगर लास्ट में मैं रिकॉन में डाल देता हूँ ऑटोमेशन पे, उसको All फिर मैं मैन्युअली चेक करता हूँ कि फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं है। उसके बाद मैं right. रिपोर्ट कर देता हूँ पीओसी बना के। Okay, that's great. And for example, whenever my personal question to you is, या whenever I enter into a bug bounty program, right? And जब भी हमें स्कोप मिलता है, जब लिखा होता है asterisk dot the domain name, usually whenever I personally, for example, use subfinder to find the subdomains, right? बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास इतने सारे सब डोमेन्स आते हैं, एंड अ पर्सन यूजुअली, स्पेशली अ फ्रेशर, अ बिगिनर, ही गेट्स ओवरवेल्म्ड कि यार इतने सारे सब डोमेन्स है, हाउ हाउ डू आई स्ट्रीमलाइन. सो इन दैट पर्टिकुलर केस, जब आपको इतने सारे सब डोमेन्स दिखते हैं, आप कैसे एक स्पेसिफिक सब डोमेन पे जाते हो? इज इट समथिंग दैट कम्स विद एक्सपीरियंस और व्हाट? जैसे ही आप सब मतलब उनके सब डोमेन्स निकालते हो, उनके सब डोमेन्स की लिस्ट आ गई आपके पास, तो कुछ कुछ लिस्ट मतलब कुछ कुछ फाइल्स होती है या. जो कि आप मतलब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह निकल सकती है, बग्स वगैरह मिल सकते हैं।
Hmm. मान लो कि कोई लॉगिन का पेज है, Yeah. मतलब वेबसाइट्स पे जैसे login.snapchat.com ऐसे लिखा है, Hmm. तो आपको लॉगिन वाले में बग्स की मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मिल जाए, क्योंकि वो लॉगिन पेज है तो आप बहुत बग्स उसमें टेस्ट कर सकते हो। Hmm. बाकी कुछ कुछ इंटरनल्स फाइल्स हो सकती है, internal.snapchat.com, तो वो सब डोमेन्स हम प्रेफर कर सकते हैं खोलना। All right, makes sense, makes sense. And Apna, although already you spoke about, you gave us a glimpse of your journey or your process as well. And that was Yeah. actually my next question. And I would really appreciate if you could tell us viewers, because I think this is the only question जो हमारे viewers सबसे ज़्यादा interested होते हैं. हर एक जो भी bug bounty में we want to know the process. How do they find bugs? So that is my next question to you. When you get a project, when you get a domain that you have to find bugs on, is there any step by step procedure? Is it, do you have a checklist that you go through and आप एक एक करके, you know, you tick off the checklist for vulnerabilities? What exactly a day in your life on a project looks like? Okay. तो अगर मैं कोई प्रोजेक्ट वगैरह उठाता हूँ जिसमें पहले सबसे पहले मैं देखूंगा कि उसके स्कोप्स वगैरह क्या है। कुछ कुछ वेबसाइट्स के सब मतलब सब डोमेन्स वगैरह भी इंक्लूड होते हैं, कुछ कुछ वेबसाइट्स के नहीं होते। Mm-hmm. तो जैसे ही मैंने उस जोन सी में मेरे को वेबसाइट मिली है उसमें मैंने स्टार्ट किया मतलब टेस्टिंग वगैरह, तो पहले मैं वेबसाइट की टेक्नोलॉजीज वगैरह देखता हूँ। इसके लिए एक वो आता है, एक्सटेंशन आता है वेपलाइजर नाम का। Ah, yes. हाँ वो जी. उससे आपको वेबसाइट की जितनी भी टेक्नोलॉजीज वगैरह है वो सब आपको पता लग जाती है। Mm-hmm. उसके साथ साथ मैंने एक चेकलिस्ट बना रखी है अपनी, जिसमें मैंने जितने भी मेरे को बग्स वगैरह आते हैं वो सब लिखे हुए हैं। तो उस बेसिस पे मैं वेबसाइट पे धीरे मतलब सबको ट्राई करता हूँ जोन से उस वेबसाइट में हो सकता है, या Okay. फिर उनके अलग अलग सब डोमेन्स पे। Okay. So you have one particular checklist and आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऑल द सब डोमेन्स, देन आप एक एक करके हर एक वल्नरेबिलिटी जो भी आपको इंटरेस्टिंग सब डोमेन लगता है उस पर आप जाके चेक करते हो एंड दैट इज हाउ यू फाइंड बग्स. I mean यस। that is the over मतलब बहुत bird's eye view of how we find bugs. या। All right, all right. Also, I was curious to understand about automation. You spoke about automation a bit. According to you, and I'm very happy that you spoke on your own about automation because that is something that am personally interested in as well. According to you, does automation play a big role in bug bounty? And if so, then matlab, why and how? Can you please tell us? ओके। हाँ, अकॉर्डिंग टू मी ऑटोमेशन प्लेस गुड रोल। कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ ढूंढ नहीं पाते पर ऑटोमेशन उसको फाइंड कर लेता है। और ऑटोमेशन भी पर लिमिटेड मतलब कुछ स्पीड में होना चाहिए, रेट लिमिट लगानी चाहिए ताकि वो जहाँ पे हम वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हैं उनको ट्रबल ना करें। Okay, हम्म। और ऑटोमेशन आप जब भी करो जब आपको पहले अच्छी मैनुअल आती है, क्योंकि मैनुअल और मतलब जो आप मैनुअली कर सकते हो वो ऑटोमेशन नहीं कर सकता, और जो मतलब ऑटोमेशन कर सकते हो वो आप मैनुअली नहीं कर सकते। okay, मतलब लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स आप ऑटोमेट कर सकते हो जल्दी से, और मैनुअली बहुत टाइम लगेगा। okay. All right. So, you feel that automation and manual testing need to go hand in hand, right? It is not like यस। you have to karo because then you'll हाँ। be missing on and you'll be spending a lot of time doing the या। repetitive task. All right. And in case of automation, is there any particular tool that you use या फिर आपने खुद अपनी कोई script बनाई है which you run on majority of your targets? पहले मैं न्यूक्लियाई रन करता था, Okay. पर उसके बाद मैंने अपनी स्क्रिप्ट्स वगैरह बना रखी है, Okay. जिसमें बहुत मतलब टूल्स वगैरह इंक्लूड है कि पहले सब डोमेन्स फाइन हो गए, फिर वेबैक यूआरएल में एंड पॉइंट्स मिलेंगे, उसके बाद कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह अलग ऐसे। तो Wow. ऐसे मैंने पूरा अपना स्क्रिप्ट बना रखा है, मैं वही रन करता हूँ। Okay, बग सब। and like that and that script जो आपने बनाई है, I'm assuming ये ऐसा तो नहीं होगा कि आप एक साथ बैठे and आपने बना ली. Obviously, with experience, when you got to know about new tools, you try to include and integrate those tools in your script as well. I'm assuming, right? यस। So आपकी जो script है, आप it is
a long journey. So you recommend कि हर एक bug bounty और aspiring bug bounty hunter को अपनी खुद की script बनानी चाहिए rather than using someone else's? हाँ, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप मतलब आइडिया लेने के लिए तो कोई और स्क्रिप्ट यूज़ कर लो, जी. पर अपनी रन करो क्योंकि आप उसमें कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। Makes sense. Makes sense. Also, one of the biggest issues that our target audience, and not even target audience, but people in whole in cybersecurity profession feels that it is so difficult to stay up to date. Right? I feel this is probably one of those fields in which you can't get complacent, and if you get complacent, then you know you're left behind, right? You have to stay updated. There are so many different vulnerabilities coming out each and every other day. So I am actually curious that how do you yourself keep yourself updated? तो मैं बहुत ऐसे लोगों को फॉलो करता हूँ जो बग बाउंटी हंटर्स है, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, और मीडियम्स के व्लॉग्स वगैरह पढ़ लेता हूँ। और मतलब उसमें नोटिफिकेशन ऑन कर रखी है मैंने, जितने भी वहाँ पे मीडियम में बग बाउंटी हंटर्स है उनकी। तो जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ, मैं सबसे पहले वो रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, और जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है वो मैं एक पेपर में लिख के अपने मतलब रूम में चिपका लेता हूँ, ताकि Oh, जब भी मैं टेस्टिंग करता हूँ तो मेरे को याद रहे कि हाँ, मेरे को ये भी टेस्ट करना है उस वेबसाइट पे। तो ये wow. मेरे बहुत हेल्पफुल है। Okay, so that's interesting. आप मतलब, okay, so you personally prefer to read and rather than watching videos in general of content creators or technical stuff के related. हाँ, मेरे को मतलब वीडियोस में भी अगर मेरे को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मैं वीडियोस वगैरह देख लेता हूँ, वरना मेरे को ऐसे पोस्ट वगैरह से पता लग जाता है कि क्या Okay, बग है। okay, makes sense. And another thing that you said, do you feel that even though you're not studying a course, but because आप इतने regularly almost every other day, as you said, आप creators जो भी आपके favorite bug bounty hunters हैं उनके आप blogs, mediums ये सब पढ़ते हैं, so in a way you do study every other day या to stay up to date. Okay, that's interesting. That's really interesting. And my next thing was I want to talk to you about vulnerability disclosure programs. And first of all, I'm sure there हमारे यहाँ पे viewers होंगे जिन्हें complete clarity नहीं होगी that vulnerability disclosure programs and bug bounty programs काफी similar है but थोड़े different होंगे. So can you please elaborate on that, and can you give our viewers the rough idea of what's the differences about? तो बग बाउंटी प्रोग्राम्स होते क्या है, जो कि प्रोग्राम्स आपको बाउंटी दे, मतलब उनकी अगर आप उनमें हंट करोगे तो आपको बाउंटी मिलेगी ही मिलेगी। Okay. और जो कि वीडीपीस है, मतलब वर्नेलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम्स, तो उसमें आपको बाउंटी का मतलब पूरा चांस नहीं होता। अगर कुछ ज़्यादा ही आपने हाई बग रिपोर्ट किया है तो वो बाउंटी दे सकते हैं, Okay. और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ पे गुडीज और हॉल ऑफ फेम्स वगैरह मिल जाएगी। All right. Makes sense. Then, I mean, out of curiosity, then why would a person, like, do you still recommend people to go to VDP programs instead of bug bounty programs? जो डिपेंड करते हैं, अगर कोई बिगनर होगा तो उसको मैं वीडीपी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वीडीपी इसमें बहुत कम हंट होता है और क्राउड भी नहीं होता, तो उसमें ज़्यादा चांसेस है कि आपको बग मिल सकता है। Okay. और साथ साथ आपको अगर बग बाउंटी पे जाओगे तो वो ज़्यादा बहुत क्राउडेड हो गया, तो Mhm. बिगनर अगर थोड़ा आइडिया ले लेगा वीडीपीस का तो वो बग बाउंटी प्रोग्राम्स में जाएगा, तो वो थोड़ा मोटिवेटेड रहेगा कि हाँ ठीक है, वो डुप्लीकेट किया कोई नहीं, तो मतलब फिर से रिपोर्ट करेंगे ये सब। Okay. All right. And these days on LinkedIn, on X, whenever a bug bounty ka jab bhi, recent, you try to look at who is doing what in bug bounty. Usually people talk a lot about, okay, I got a $10,000 bounty, right? I got a $1,000 bounty. And
people, I remember myself as well, I used to get really demotivated in the sense that I used to feel कि यार I'm also trying for that, but मेरे को वो bounty नहीं मिल रही. So am I good enough, am I doing something wrong? And that really discourages people, that really discourages students, beginners, right? So in that particular, I'm sure आपने भी वो face किया होगा when you, तो आपने उसको overcome कैसे किया, and how you are at where you are right now? तो मैंने सोचा कि इनकी मेरे को टेक्निक सीखनी पड़ेगी तो मैं उनका एक्सपीरियंस भी देखता था कि हाँ ये तो 3 साल से या 5 साल से बग बाउंटी कर रहे हैं, मेरे को तो अभी इतना ही कम टाइम ही हुआ है. Hmm. तो मैं सोचता था चलो ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल लर्न फ्रॉम देम, आई विल रीड देयर आर्टिकल्स एंड ऑल, तो धीरे धीरे हो जाएगा. All और right. Okay, so you again, comparison is the thief of joy. You should not compare your journey with others. अपनी pace या पे चलो, and all right, makes a lot of sense. And we were talking about VDP and bug bounty programs, right? And I wanted to talk about organizations now. According to you, let's assume that there's an organization by the name of ABC, right? And ABC organization now has two. They have a product, they have a web application, and they obviously need to make sure that it is secure. So, in your particular case, which option is better? Is it to have an in-house team of security professionals that will make sure that the product is safe, or do you think that okay, it is better to have a bug bounty program in which bug bounty hunters all over the globe can try and find the application's vulnerabilities? So what do you think about that? Aapke according, which is better? आई थिंक बग बाउंटी प्रोग्राम्स उनको लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि सबका अलग माइंडसेट होता है. तो ज़्यादा मतलब टेक्निक्स वगैरह भी होती है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको बाहर से बग्स ज़्यादा मिल सकता है रेदर देन इन हाउस सिक्योरिटी टीम्स. All right. And according to you, if a bug bounty hunter actually reports a vulnerability on in an organization's application, then us organization ko, how should they handle that vulnerability report? Like how should they handle that report, and how मतलब कितना frequently उन्हें they should stay in loop, and what should they do about it? ओके, तो जैसे आपके पास मतलब सिक्योरिटी टीम्स के पास कोई बग आता है, तो वो कैटेगरीज में प्रायोरिटी में वो कर देते हैं, सेंड कर देते हैं अपनी सिक्योरिटी टीम्स को, All right. जो डेवलपमेंट वगैरह करती है कि ये P1 है, ये P2 है. P1 मतलब क्रिटिकल, P2 मतलब हाई, P3 मीडियम, P4 लो. तो उस कैटेगरी में वो कर देते हैं, अपनी टेक्निकल टीम्स को भेज देते हैं. तो उस बेसिस पे वो फिक्स वगैरह का ड्यूरेशन आपको मेल कर देता है. Okay. हम्म, और All right. जब वो फिक्स होता है, जब भी आपको बाउंटी मिलती है. अच्छा, सो आपको बाउंटी तब नहीं मिलती है जब आप रिपोर्ट कर दो, बट आपको बाउंटी तब मिलती है व्हेन दे फिक्स इट. या Acha, okay. And like also another thing, when you submit a report, in the report, are you supposed to submit the remediation? The remediation is as well, in the sense that this is the vulnerability, this is how I exploited it, and in order to patch this, you have to do this. आपको वो भी क्या submit करना पड़ता है, या आपको सिर्फ exploit करना होता है उसे? ऑप्शनल होता है. अगर आप सबमिट कर देते हो तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, मतलब आपको ज़्यादा बोनस वगैरह मिल सकता है उनके बाउंटी के साथ साथ. Okay, but it is not मतलब compulsory in नॉट that. कंपल्सरी. या All right. Okay, makes sense. And now I actually wanted to shift the podcast to another section in which I want to talk about, achievements, recognition, and your personal experience, if I may put it that way. ओके. So let's start. I know आपने, I mean, you said you reported 500 bugs in only in Indian websites, which is crazy in itself. But do you remember your first bug that you reported by any chance? आपको याद है? या So आप क्या हमें बता सकते हो क्या बग था, एंड कैसा आपने रिपोर्ट किया, एंड व्हाट डिड एग्जैक्टली डिड यू फील? ओके, बहुत ही सिंपल बग था वैसे. तो था क्या, एक वेबसाइट थी, उसके मतलब बग बाउंटी प्रोग्राम था उन वेबसाइट का. तो रैंडमली मैंने एक बग सीखा था उसी दिन,
जिसको हम बोलते हैं ब्रोकन लिंक हाईजैक। ओके। तो मैं उस वेबसाइट के नीचे गया, तो नीचे ना आपके पास आइकन्स होते हैं उनके सोशल मीडियाज के, जैसे फेसबुक, ट्विटर एंड ऑल। तो मैंने फेसबुक का लिंक खोला और उसमें लिखा हुआ था कि दिस लिंक इज ब्रोकन, जिसका मतलब है कि उन्होंने अपना फेसबुक पेज तो बनाया होगा, हम्म। पर जो उसका यूजर नेम था, या फेसबुक वगैरह ने उनका अकाउंट डिसेबल या डिलीट कर दिया था। ओके। और उन वेबसाइट ने अपना मतलब रेगुलर चेक नहीं किया, जिससे आपको पता चला कि ये यूजर नेम अवेलेबल है। तो इसमें आप कर क्या सकते हो कि आप एक फेसबुक अकाउंट बना सकते हो उसी यूजर नेम से, और वाओ। आपने ब्रोकन मतलब ब्रोकन जो लिंक थी उसको हाईजैक कर लिया। या। तो इसके लिए मेरे को $50 मिली थी बाउंटी। तो मेरी मतलब पहली बाउंटी यही थी। वाओ, दैट्स क्रेजी। एंड वाज इट आल्सो द फर्स्ट बग जो आपने ढूंढा था, लाइक ऑन अ लाइव वेबसाइट, या ये फर्स्ट बग भी था? यस। वाओ, सो आपको अपनी फर्स्ट बग में ही आपको एक बाउंटी मिल गई, एंड दैट हाँ। मोटिवेटेड यू टू फाइंड 500 ऑफ देम। यस। That's actually very interesting, because um like majority of cases में, including me, whenever we think about bug bounty, majority of people think okay, SQL injection, cross-site scripting, CSRF, SSRF, like people always try to get into those technical terms, and they forget the basic things. जैसे आपने ये जो it is such a simple vulnerability but at the same time so impactful, एंड आई थिंक इससे ही रिलेटेड हमारी सब डोमेन हाईजैकिंग अटैक टाइप भी कुछ होता है, एंड आई थिंक विल दैट इज क्रेजी, दैट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू सेड। आल्सो फर्स्ट की तो हमने बात कर ली, आई वुड रियली लाइक इफ यू कुड टेल आवर व्यूअर्स अबाउट योर मोस्ट रीसेंट वन, जो अगर आप अभी बता सकते हो। या। ओके। मेरी मोस्ट रिसेंट है अकाउंट टेक ओवर, ओके। जो कि मैंने बग क्राउड में एक प्रोग्राम में ढूंढी थी। और उसमें आपका बग क्या था कि वो जब आप लॉगिन करते हो गूगल के थ्रू, तो एक टोकन बन जाता है। तो वो टोकन आता है AWS वो टेक्नोलॉजी से। और बग ये था कि आप उस टोकन को अगर एडिट करोगे, और एडिट करके मैंने ईमेल आईडी चेंज कर दी थी, तो जो नया वो टोकन आ गया था वो मैंने फॉरवर्ड किया, और मैंने अकाउंट टेक ओवर कर लिया था, क्योंकि वेबसाइट उस टोकन के थ्रू ही काम कर रही थी। ऑलराइट। सो या जिस केस में आपने अकाउंट जब टेक ओवर किया था, आपने किसी यूजर का अकाउंट टेक ओवर किया था, किसी और तीसरे यूजर का? नहीं, आप अगर ऐसा करोगे तो मतलब बग बाउंटी में कंसिडर नहीं होगा, और आपके ऊपर कोई केस वेस भी हो सकता है। तो ओके। इससे अगर आप टेस्टिंग करते हो तो आप अपने मतलब दो अकाउंट बनाओ, जिसमें आप विक्टिम भी खुद हो और अटैकर भी खुद हो। तो हाँ। उसमें अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको बाउंटी मिलेगी। तो मतलब रूल होता है ये। Acha, all right, makes sense. Okay, and also, if you could tell us about your favorite bug that you ever found, आपका सबसे favorite. ओके। हाँ, सबसे फेवरेट था मेरा, मतलब बहुत बेसिक सा था पर इम्पैक्टफुल था। मैं एक वेबसाइट में ऐसे ही टेस्ट कर रहा था, तो मेरे को उसके सिस्टम मतलब कोई वेबसाइट में कोई बग नहीं मिला। पर मैंने मतलब मैं अगले दिन टेस्टिंग के लिए उठा, तो मेरे पास मेल आ रखा होता है कि आप अपना पासवर्ड फॉरगेट कर चुके हो, मतलब फॉरगॉट पासवर्ड वाला लिंक आया। Mm-hmm. तो मैंने उस वेबसाइट में खोला, तो मैंने पहले नोटिस नहीं किया, पर फिर मैंने दूसरी बार देखा तो उसमें लिखा होता है HTTP, जिसका Okay. मतलब कि वो सिक्योर्ड नहीं है, और ये एक बग है कि अगर आप अ, किसी से हॉटस्पॉट लेके वो लिंक खोलोगे तो आपका अकाउंट टेक ओवर हो सकता है। पासवर्ड चेंज की रिक्वेस्ट वो इंटरसेप्ट कर सकता है। All right. And I'm assuming उसके लिए आपको bounty भी मिली होगी, right? हाँ, अच्छी मिली थी। अच्छा, ओके। ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग कि आप हमें बाउंटीज के बारे में नहीं बता सकते, राइटफुली सो, बट डू यू आप क्या हमें बता सकते हो व्हिच आपने कौन सी कंपनीज, बिग कंपनीज में आपने बग्स निकाले हैं? अच्छा, मैंने एप्पल, गूगल, एप्पल, गूगल एंड उबर, ओला,
और मर्सिडीज, पोर्शे और Niva ऐसा। Sainaba. I think you got the point. We got the point. That's crazy. Really, I mean, that's really motivating to, think about it. That how you started your journey from by meeting, like-minded people in your internship program, and how started learning on your own. You are so, मतलब आप इतने regularly, you watch Medium blogs, and that's how you update yourself and stay up to date with the latest technology. I mean, that's really inspiring, man. And so the next thing about is actually about community and collaboration that I wanted to talk about. First of all, do you feel networking in cybersecurity or in any profession for that matter? Do you feel networking matters? हाँ, मेरे को लगता है नेटवर्किंग मैटर करती है, क्योंकि उसके थ्रू आप और लोगों से मिलते हो, लाइक माइंडेड पीपल से, जिसके थ्रू आपको उनका कुछ मतलब आपको इंफॉर्मेशन वगैरह मिलते रहते हैं, नॉलेज मिलती है। और हाँ, मतलब साइबर सिक्योरिटी में भी ये फील्ड बहुत अच्छी है कि अगर आप नेटवर्किंग करोगे, क्योंकि किसी ने मतलब कोई मतलब बग बाउंटी के बेसिस में बताता हूँ कि नेटवर्किंग है मेरी। तो एक मेरे किसी दोस्त ने बग रिपोर्ट किया, मतलब अलग बग था वो, सेवरिटी वगैरह। तो उसके थ्रू मैं भी सीखूंगा और भी लोग सीखेंगे, तो ये सब नेटवर्किंग के थ्रू ही हुआ। मतलब All right. अच्छा। That's great. That's great, man. And so for in case of networking, आपने क्या कोई community join की थी या आप Discord पे channels के part थे? आपने कैसे किया था start? हाँ, स्टार्ट मैंने कम्युनिटी, वो गुड़गांव पुलिस वाला हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप था, तो Okay, उसके थ्रू हुई थी। और उसके थ्रू फिर मैंने बिसाइड्स वगैरह वो जाने लग गया, कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करी, देन मेरी और नेटवर्किंग बनी। all right, okay. And what advice would you give to newcomers, especially in bug bounty hunting space, to that are looking to learn more and also make a name for themselves? आप क्या कहोगे? Okay. तो मेरा ये, अगर आपको बग बाउंटी वगैरह में आना था मतलब है, तो यू हैव टू लाइक लर्न डेली। ये नहीं कि आपने मतलब मैं अभी भी लर्न सीखता हूँ बग बाउंटी की टेक्निक्स वगैरह। तो यू हैव टू लर्न डेली। ऑल्सो अगर आपको मतलब जो जो आप बग सीखते हो, तो उसको उसी टाइम टेस्ट करने चाहिए। कि मतलब मैं यही करता हूँ, जो जो मैंने बग सीखे वो मैं टेस्ट करता हूँ उसी दिन, ताकि मैं बाद में भूलूँ नहीं, और मैं नई टेक्निक्स वगैरह ढूंढता हूँ उसको मतलब All right. के लिए। Okay, and for in your particular case, जब या आप when you started your journey in bug bounty, did you take any particular course या फिर आप in general जो आपको इंटरेस्टिंग लगता था आप उसके बारे में ऑनलाइन जाके फ्री रिसोर्सेज के थ्रू पढ़ते थे और did you pay for a course? How did you get मतलब get so much knowledge? ओके, तो आई लर्न फ्रॉम माई ओन। आई यूज टू सी वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड रीड मीडियम्स व्लॉग्स, and from them only I learned and I got the idea. So you I believe. started from the basic, like the basic bugs in the websites, and then slowly I go on medium, heights, and critical. So, All right. So do you believe that it is I mean, you are an example, but still I have to ask you this question. People a lot of times say that learning anything in security is so difficult in the sense that it is so expensive. I mean, there are top certifications ki baat karo, you talk about courses. Do you feel that you don't necessarily have to pay for courses to get started in bug bounty? You can learn from online resources. so you can learn from online resources also, but कभी कभी होता है कि आपको रिसोर्सेज से नहीं पता चल रहा कि ये होगा कैसे। सो यू कैन टेक अ कोर्स ऑल्सो। Okay. बेसिक आप मतलब पहले आपको प्रोग्रामिंग वगैरह थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें आनी चाहिए। ये नहीं कि आपको अगर अच्छी आती है तो मतलब अगर आपको अच्छी नहीं आती तो आप नहीं कर सकते। Okay. या All right. And do you have any particular blogs, yeah, for, a particular course in mind that you would recommend students out there to go and get?
so that they can. Do you have any course or anything in mind? Yes, sir. एक्चुअली आई हैव अ कोर्स, मेरी लाइफ कोर्स होगी Acha. नेक्स्ट मंथ से. All right. So you will be teaching the students only. यस, आई विल बी टीचिंग लाइव, एंड इट विल बी फ्रॉम बिगनर्स टू एडवांस, जिसमें मैं सब कैटेगरीज के बग्स आपको सिखाऊंगा, मतलब क्रिटिकल, हाई, मीडियम एंड लो. All right. और आपको टेक्निक्स वगैरह बताऊंगा कैसे कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, कैसे कैसे आप इसको बाईपास कर सकते हो. Okay. And like before, if anybody wants to learn that, वो करने से पहले do you expect any prerequisites from the viewers? Or anyone, any beginner can join and learn. एनी बिगनर कैन जॉइन एंड लर्न, और आप इसके थ्रू अर्निंग भी कर सकते हो, और मतलब आप, ऐसे हो सकता है कि आप सीख भी रहे हो, आप कमा भी रहे हो, क्योंकि अगर आप कोई बग बाउंटी में आप ऐसे मतलब उसको प्रैक्टिस करोगे बग्स को और रिपोर्ट करोगे, तो चांसेस है कि आपको बाउंटी मिल जाए. Yeah, makes sense. That's great, man. And actually, and how can one enroll in this particular life? Like, do they contact you on LinkedIn or do you have a website? How do they do so? दे कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन लिंक्डइन. Okay. And then you can help them out. यस. That's perfect, man. That's great. So everybody watching, if you guys want to learn bug bounty, and if you want to get started, I would, my love, definitely go and check it out. You can hit him up. I'm sure he's a very nice guy. He would 100% be able to take out time and help others out. Do you actually, and talking about this, do you actually believe that contributing back to the community that really helps the person contributing as well? यस, आई थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आप किसी मतलब हर चीज़ को देखोगे, टेक्निक्स वगैरह देखोगे जब भी आप सीखोगे, तो Yeah. एवरीवन हैव्स डिफरेंट माइंडसेट, तो उसके थ्रू आप अलग अलग चीज़ें सीख सकते हो. All right. And now we want to switch to, the next section of the podcast, which is about freelancing and mainly about time management. And also a question because we viewers would like to understand, your mindset behind your choices. So what do I mean by that? Usually when uh, a student, they graduate from their, undergrad, they majority of the cases may they either go for higher studies or they Yeah. go for the regular 9 to 5 jobs, the standard 9 to 5 corporate jobs, right? But you in on the other hand decided to go for full time bug bounty hunting. So I want to know आपने ये आपको किस चीज ने मोटिवेट किया टू pick freelancing bug bounty hunting over a corporate 9 to 5 job? तो मैं करता था पहले पार्ट टाइम, पर मेरा ऐसा था कि सुबह उठो, पूरा टाइम लग जाता था, और कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा था मेरा. तो मैंने सोचा कि लेट डू बग बाउंटी, क्योंकि आप एज अ फ्रीलांसर, क्योंकि फ्रीलांसिंग में आपको क्या हो रहा है कि आप अपने बेसिस पे चल सकते हो, कंपनीज के बेसिस पे आप नहीं मतलब कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके ऊपर. और फ्रीलांसिंग में मेरा ये भी है कि मेरे पास फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, कि मैं बाद में मतलब कॉलेज भी जा सकता हूँ, उसके बाद कर सकता हूँ बग बाउंटी, या कभी भी कर सकता हूँ. Hmm. तो All right. So आई, that's the main reason you decided to go for freelancing 9 to 5 because you wanted या, to operate on your time, right? यस. All right. And that is exactly the next question that I was going to ask you, which is you've been working as a freelancer for some time now, and obviously, आपके pros and cons होंगे, right? So, या, according to you, can you tell us a few of the pros? Although you did tell a few, but आप थोड़े pros and maybe cons भी आप बताना चाहो freelancing के. ओके. तो फ्रीलांसिंग में आपको कौन सा आपके यही हुआ है कि आपके पास टाइम फ्लेक्सिबल है, और आप कितने मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हो, कंपनी में आपके पास लिमिटेड होता है. Mhm. All right. और कौन सी यही हुआ कि आपको मतलब गारंटी नहीं होती कि आपको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे बग बाउंटी में, Yeah. क्योंकि चांसेस होते हैं कि डुप्लीकेट चले जाते हैं, पर 9 to 5 में आपको मतलब वो तो मिलेंगे ही पैसे. Yeah. आपने duplicates की बात की.
actually, the other thing that I wanted to talk about, um, so freelancing and bug bounty in specific, as you said, there is no surety. I mean, you can earn $10,000 from one bug, but you can also Yeah. earn nothing from by reporting 10 bugs, because when you reported it, आपके वो duplicate थे, किसी और ने आपसे पहले वो report कर दिया था. So do you feel luck also plays a major factor in bug bounty hunting? Yeah, I feel like little luck is good, but you should know the proper techniques and the bypasses also. Like मेरे पास अलग अलग टेक्निक्स है जो कि खुद भी मैंने ढूंढी है. अगर आपकी मतलब टेक्निक्स अलग होगी तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आपको बाउंटी मिल जाएगी. All right, ठीक है. That makes a lot of sense. And you said that, one of the pros of working as a bug bounty hunter is that you are not restricted to one project at a time. You Yes. can basically work on various projects, right? So, aap personally, on your day-to-day task, do you like work on one project, or आप भी multiple projects पे work करते हैं? And if you do work on multiple projects, then how are you able to take out time to each particular project? Because I'm assuming मेरे साथ तो क्या होता था, अगर मेरे को एक भी डोमेन मिल जाता था, उसकी मैं सब डोमेन निकालता था, it used to get so overwhelming for me personally. So how do you manage giving proper time to each project, and how do you manage all these three different projects in one at a time? ओके. तो मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वगैरह पे ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं कुछ मतलब एक प्रोजेक्ट में अगर मैंने सब एक बार ट्राई किया तो मैं दूसरे प्रोजेक्ट में भी उस टाइम कर सकता हूँ. मतलब ऑटोमेशन में डाल सकता हूँ तीनों को. देन उनके जो भी नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि ऑटोमेशन के बाद वो मैं ट्राई कर सकता हूँ उन सब में. तो Okay. आई प्रेफर देन. और उसके साथ साथ मेरे को मतलब टाइम मिल जाता है कि यहाँ पे कर लूँ. All right. एंड ओवरऑल जो आपकी बग बाउंटी करियर है, उसमें यू आर एबल टू डू यू हैव अ पर्सनल सोशल लाइफ? आर यू एबल टू टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ, or is this your only true passion, or do you enjoy something else as well? तो बग बाउंटी में एज अ मतलब पार्ट टाइम टाइप करता हूँ कि मैं मतलब फ्लेक्सिबल हूँ कि अगर मैंने दिन में नहीं किया तो मैं रात को कर लूंगा या नींद नहीं आ रही तो मैं कर लूंगा. Okay. और सो आई एम एबल टू टेक टाइम. All right. And in your freelance career, I'm sure that you must have faced burnout, right? Obviously, you must have faced burnout in your career. And if so, then how did you cope up with it? And if do you have any tips for individuals out there who are facing burnout as well? तो बर्नआउट मेरे को जब हुआ जब मैंने बहुत बग्स वगैरह रिपोर्ट करे और मेरे डुप्लीकेट्स गए. पर उससे मैंने मोटिवेशन भी ली कि हाँ मेरा बग तो मतलब वैलिड था पर किसी और ने रिपोर्ट रिपोर्ट कर रखा था इसलिए मेरा डुप्लीकेट गया. Mhm. तो मैंने ट्राई किया कोई नहीं, एक गया दो गए डुप्लीकेट्स तो रुकना नहीं है तो कर दिया मैंने. मतलब बग्स वगैरह कुछ कुछ वैलिड भी गए फिर. तो उसके बाद मेरे को मोटिवेशन मिली. All तो right. आप मतलब जो भी बिगनर होता है तो डुप्लीकेट्स वगैरह देख के ऐसे मतलब स्ट्रेस में मत आ जाना. आप कॉप अप करना, आपके मतलब वैलिड भी आएंगे. Hmm. Makes sense. Anji. And from that, we're going to be moving to the last section of the podcast, in which, Devansh, I'll tell you about the last section. We tell our viewers 1 week in advance that this is the guest that's going to be coming. So we told them about you. We told them that you're a bug bounty hunter, and they obviously have a few questions. So we roll out a Google form and they ask those questions to you. So I'm going to be asking a few of them to you, which I feel, everybody has. So let's start with the first one. The first question is, yeah, in your particular case in bug bounty hunting, do you हम्म. feel that a person can with having no technical background can start, and a person, basically my question is, can a person from a non-technical background, can he also become a bug bounty hunter? ओके.
तो आपको इतना ज़्यादा वो नहीं चाहिए होता, मतलब कोई एक्सपीरियंस या नॉलेज बग बाउंटी हंटर के लिए। बस आपको टेक्निक्स और मतलब बेसिक पता है कि हाँ ये बग है तो ये है क्यों, मतलब रीजंस वगैरह। Yeah. और All right. और आपको मतलब कोई नॉलेज वगैरह नहीं चाहिए होती ज़्यादा। आप कि आपको अगर कोडिंग नहीं आती तो आप ये नहीं कर सकते, इतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। और हाँ, कोई भी मतलब बैकग्राउंड का या नॉलेज वगैरह का ज्वाइन कर सकता है बग बाउंटी। मैं खुद कॉमर्स बैकग्राउंड को हूँ, अच्छा. तो या आई स्टार्टेड इट इनटू साइबर सिक्योरिटी देन। Okay. Okay, that's very interesting. So you feel even if you had commerce or arts in school, and if या you have little to no knowledge of programming, you can still get started. And starting में मुश्किल होगी, and then obviously, you can, once you stay consistent, you can do it. That's great. And other thing, obviously, अगर एक podcast हो रहा हो regarding cyber security and certifications की बात ना हो, ऐसा तो possible है ही नहीं. So according to you, do certifications matter? First part of the question, and second part, if they do, then do you have any personal favorite or any certifications that you recommend students how to get there? ओके। सो बाउंटी करते हो तो आपको इतना मतलब एज अ फ्रीलांसर टाइप करते हो या मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करते, तो सर्टिफिकेशन इतनी मैटर नहीं। पर अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में करना चाहते हो तो कोई कोई सर्टिफिकेशन कंपनी सर्टिफिकेशन मांगती है। Okay. और मेरी फेवरेट है OSCP, Ah, या जो कि मेरी सेंटर है या साइबर सिक्योरिटी में है, तो जरूर करो। all right. Perfect. And the last question was, yeah, that's exactly. And I would like to, before I ask this question, I would like to tell our viewers as well. You're currently pursuing masters in या cybersecurity from Germany, Berlin, right? So the thing was, according to you, do students, do they need to go for a particular professional graduate or postgraduate master's course in computer science or cybersecurity to get started, or as you said earlier, it's not required? to get started it's not required, have if you want to gain some extra knowledge and like in advanced level, then Yeah. yeah you can pursue masters. All right. And out of curiosity, is there a particular reason that you decided to pursue a master's from abroad, especially from Germany? Yeah, actually I wanted to gain some international exposures and pulse, Okay. like international, All right. That and that also makes sense. Yes. All right, that is perfect. And the last question was about program. Oh, there are two questions, and I'm sure you'll be able to answer them very quickly. The second last question is about programming. You, although आपने उस पे बात की already, but again, just to reiterate, according to you, programming is it necessary for a bug bounty hunter to have experience in programming, or do you feel it is not so important, but if you have it, it's a plus point? okay. प्रोग्रामिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता बग बाउंटी में, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए बेसिक वगैरह कि ये बग है। और अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो इट्स अ प्लस पॉइंट। All right. Because I am assuming, because if you know how to code, then maybe you can automate your job कह रहे थे, a यस। few stuff out of that checklist जो आप scans run करते हो. I think आप I think वो automate कर सकता है, हो सकता है, right? And the last question is obviously about AI. There are so many different companies now that are have laid a lot of emphasis on artificial intelligence, machine learning, basically automating pen testing or red teaming in general, right? Even there are companies that are trying to automate blue teaming. So according to you, if companies are successful, which they are obviously, does this mean that a bug bounty is something that
अब मतलब फ्यूचर में उसका मे बी स्कोप खत्म हो जाएगा, या विल एआई और ऑटोमेशन रिप्लेस बग बाउंटी हंटर्स? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ओके। ऑटोमेशन मतलब मैनुअली जो आप मैनुअल ढूंढ सकते हो कुछ कुछ बग्स, वो ऑटोमेशन नहीं कर सकता। मतलब अगर कर भी देगा तो चांसेस होते हैं ऑटोमेशन के कि आपको बग्स फॉल्स बहुत मिल सकता है। ओके। ज़्यादा कंपनीज एआई को इम्प्लीमेंट कर रही है तो इससे बग्स वगैरह भी मतलब इंक्रीज हो रहे हैं। ओके। मतलब नई नई टेक्निक्स वगैरह हो रही है तो बग बाउंटी फ्यूचर के लिए तो चल जाए, मतलब बंद नहीं हो। So that's I think that's a very good news for all of us, majority of us, because हम सबका चलो ये डर तो खत्म हुआ. That's great, man. And all right, I think that was all for the podcast. That's a wrap for this episode of Besides Weekly. We hope you guys found today's conversation with Mr. Devansh Chauhan as inspiring and as insightful as we did. Devansh, before we finish this podcast, do you want to tell the viewers about something, about a course that you already spoke about a bit, but maybe you want to tell our viewers again about it? Sure. I'm going to take a course next month, from beginner to advanced। तो उसमें आप एनरोल कर सकते हो, 2 महीने का कोर्स है। और उसमें आपको पूरा बेसिक से लेके आपको हाई क्रिटिकल सेवरिटी के बग सिखाए जाएंगे और उनकी मतलब बाईपासेस और नए नए टेक्निक्स वगैरह बताई जाएगी और लाइव क्लासेस रहेगी। Perfect. That's great. And for that, you can obviously hit Devansh up on LinkedIn. His LinkedIn profile URL is obviously down in the description, and we can also pin it on the comment section. And that's it. His work is obviously true. Matlab, it obviously has a lot of highlights, and he is in a very evolving bug bounty field in cybersecurity. Be sure to check out next week's podcast, because we're going to have another expert and a lot of good discussions about it. Don't forget to subscribe, press that bell icon, and stay connected with us to explore latest things in cybersecurity. Until then, I'm your host Karthik Verma, and I'm from Besides Noida, and always we are beside you. Thank you.